Our topic is chapter 4, linear equation in two variables. In the previous class, we have studied what are the linear equations, what are the linear equation in two variables, what are the linear equation in one variables, what is the general form of linear equation, and how we can convert the given equation into the general form, and how we can compare the given linear equation to the general form. Now our next topic is solution of a linear equation or the root of the equation. Solution of a linear equation or root of the equation. As we have already studied solution in polynomials, likewise the definition of solution is the same. Solution means, solution of a linear equation means how many variables are there? Two variables. So two variables, so two values should be there for the solution. तो यहाँ पे two values आएंगी तो उसको क्या बोलते हैं? A pair of values one for x and one for y, which satisfy the given equation. Again I am repeating, solution of a linear equation means the value of x and y which satisfy the given equation. Satisfy means the left hand side of the equation should be equal to right hand side of the equation. Satisfy करने का मतलब है जो left hand side है equation की वो right hand side के equal होना चाहिए. Solution of a linear equation means pair of values why? Because we can write x and y in a pair. Two values are there, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? Pair of values. One value is for x, one value is for y. If the equation is in x and y, अगर कोई और वेरिएबल है तो वो वैल्यूज होंगी उन वेरिएबल की विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. सपोज एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कोई भी इक्वेशन है मेरे पास x माइनस 2y equals to 4. Tell the solution of the equation. Suppose a pair of solution is given 2, 0. So we will check whether it is a solution or not. Solution or not. What we will do? We will check left hand side and right hand side. Right hand side is 4. Left hand side is x minus 2y. Put the value of x and y. This is x. This is y. So 2 minus 2 into 0. 2 minus 0, 2. So left hand side is not equal to right hand side. It means 2, 0 doesn't satisfy the equation. So 2, 0 is not a solution. Am I clear with this? कोई भी आपको इक्वेशन गिवन है, कोई भी पॉइंट गिवन है आपको उसमें, तो चेक करना है कि वो उसका सॉल्यूशन है कि नहीं. तो उसके लिए क्या करेंगे? जो भी सॉल्यूशन है आगे वाला पेयर हमेशा फर्स्ट वेरिएबल होता है, सेकंड वाला पेयर जो है हमेशा सेकंड वेरिएबल होता है. जैसे यहाँ पे 2 and 0 है, वेरिएबल क्या है इक्वेशन में? x and y. So 2 will represent x and 0 will represent y. तो x माइनस 2y लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें 2 और 0 पुट की वैल्यू हमने x और y की, तो सॉल्व करके आया 2. उसके बाद हमने देखा राइट हैंड साइड में कितना है? 4. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इट मींस इट इज नॉट अ solution. Now we will see how we can find the solution of linear equation. This is generally by hit and try. There is no particular method for it. I am explaining how to finding the solution. Finding the
solution. This is the procedure only. There is no such hard and fast method for this. ये सिर्फ एक प्रोसीजर है, जैसे हम कर रहे हैं कंटिन्यू वैसे ही इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट हो जाएंगे. कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हो. आई एम टेकिंग द इजीएस्ट वन. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x plus 2y equals to 6. कितने सॉल्यूशन? Suppose I am writing finding the 5 solutions of the equation. ठीक है? So our equation is x plus 2y equals to 6. First step is find the value of a variable into another variable. आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में. First step, find the value of a variable, generally y, in terms of another variable, that is x. Generally we will do that. तो यहां से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की. 2y equals to 6 minus x. So y equals to 6 minus x by 2. There is no hard and fast rule कि आपको y की ही वैल्यू x में निकालनी है. आप x की वैल्यू भी y में निकाल सकते. Now put the values for x and find y. जितने भी आपको सॉल्यूशन चाहिए. अब फर्स्ट सॉल्यूशन मैंने लिया x इक्वल्स टू 0. आपकी मर्जी है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, अंडर रूट, जो मर्जी आप पुट करो, आपको उसी हिसाब से वैल्यू फाइंड करनी है. x is 0, so y equals to 6 minus 0 by 2, that is 6 by 2, that is 3. So when x equals to 0, y equals to 3. Second is x equals to minus 1. So y equals to 6 minus 1 upon 2. 6 plus 1 by 2. 7 by 2, that is 3.5 or 7 by 2. You can put either way. 3.5. Next, x is 1. Y equals to 6 minus 1 by 2. That is 5 by 2. That is 2.5. Third one, total how many solutions we have to find? We have to find 5 solutions. Now x equals to 2 and x equals to minus 2. So y will be 6 minus 2 by 2, 4 by 2, that is 2. Y equals to 6 minus 2 upon 2, that is 8 by 2 equals to 4. So 1, 2, 3, 4, 5. These are the solution. We can write in the form of a table also. For graph, we will make the table. How? This one divided into 2 rows. This is for x, this is for y. When x is 0, y is 3. When x is 1, y is 2.5. When x is minus 1, y is 3.5. When x is 2, y is 2. When x is minus 2, y is 4. So this is our solution table for the given question. Again, I am repeating how to find the solution. Firstly, change a variable into another variable. Then put that variable's value and find the another variable. आपको एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकालनी है. फिर जो भी वेरिएबल डिपेंडेंट बनता है, लाइक इन दिस क्वेश्चन इट इज x, तो x की वैल्यूज डिफरेंट पुट करते जाइए, y की डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करते जाइए. अब देखो यहाँ पे हमें बोला था सिर्फ 5 सॉल्यूशन, तो मैंने 5 निकाले हैं. जरूरी नहीं है मैंने x0 लिया है तो आप भी x0 लो, मैंने 1 लिया है तो आप भी 1 लो. देयर आर लॉट ऑफ वैल्यूज, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स. So how many solution we can find? Infinitely many solution. So we came to know about a result, that is a linear equation which in two variables has how many solutions? Infinitely
infinitely many solutions. Infinitely many solutions. This can also become in exams also for 1 mark. A linear equation in two variable has how many solutions? It has infinitely many solutions. How many solutions? Infinitely many solutions. Now, this is also not a rule, but this is for the simplification. For simplification. Two solutions, take x equals to 0 and y equals to 0. You will get the simple solution. If in the question it is asked write two solutions only, तो आपको क्या करना है? x 0 ले लेना है, y की वैल्यू निकालना है, y 0 लेना है, x की वैल्यू निकालना है. ठीक है? These are the simple one. It is an easy way to find the solution. Take x equals to 0 and find y. Find y. Take y equals to 0. Find x. दो सॉल्यूशंस इजीली आ जाएंगे हमारे पास. उसके बाद जो भी सॉल्यूशन हमें फाइंड है हम अकॉर्डिंगली फाइंड कर सकते. नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 4.2 of NCERT. First question is, which one of the following option is true? Y equals to 3x plus 5 has a unique solution. Number 2, only two solutions. Number 3, infinitely many solutions. Infinitely many solutions. So as I have told you already, in the note we have also written, a linear equation in two variable has infinitely many solutions. So it is the right answer. Now, number 2, write 4 solutions for each of the equation. 4 solutions. First part, 2x plus y equals to 7. Find the value of a variable in form of other, or the simple method, x equals to 0. Firstly, I'll change the equation. Y equals to 7 minus 2x. First one is x 0. So y equals to 7 minus 2 into 0. That is 7 minus 0 equals to 7. Second one, x equals to 1. So y equals to 7 minus 2 into 1. 7 minus 2, that is 5. Third one, y equal to 0. 0 equals to 7 minus 2x, or 2x equals to 7, or x equals to 7 by 2, that is 3.5. Fourth one is x equals to minus 1. So 7 minus 2 into minus 1, 7 plus 2, that is 9. So the next one is 9. Now we will make the table also. This is x, y. 1, 2, 3 and 4. x0, y7, y0, x 3.5. x1, y5, x minus 1, y9. This is the simple way to do the question. It will come only 1 or 2 marks. इससे ज्यादा में नहीं आएगा ये. बट ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो सॉल्यूशंस फाइंड करना है, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, उसमें इनिशियल बेसिक स्टेप होता है. तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ वाला क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स में भी आ सकता है. नाउ द सेकेंड पार्ट, पाई एक्स प्लस y इक्वल्स टू 9. अब यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू नहीं गिवन है, तो आपको ज्यादा बॉदर नहीं करना है. आपको पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, आपको सिंपली सॉल्व करना है. सो y विल बी 9 माइनस पाई एक्स.
First is x 0. So y will be 9 minus 0, that is 9. Second one is y 0. So put y equals to 0. We will get pi x plus 0 equals to 9 or x equals to 9 upon pi. This is second solution. Now we can take x as 1, y equals to 9 minus pi into 1, that is 9 minus pi. We can take x equals to minus 1, y equals to 9 minus pi, minus 1 equals to 9 plus pi. We can take one more also. I am just writing it. यहाँ पे देखो x के साथ हमारे पास पाई मल्टीप्लाई है, तो वी कैन टेक वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1 बाय पाई ऑल्सो. अगर मैं x 1 बाय पाई ले रही हूँ तो y क्या आया मेरे पास 9 माइनस पाई इंटू 1 बाय पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 9 माइनस 1 इज 8. तो लाइकवाइज आप x की वैल्यू माइनस 1 बाय पाई भी ले सकते हैं और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. आई एम मेकिंग द टेबल. दिस इज x, y, 1, 2, 3, 4 and 5. When x is 0, y is 9, x is 1, y is 9 minus pi, x is minus 1, 9 plus pi, x is 1 by pi, then y is 8. 1 upon pi, then y is 8. When y is 0, x is 9 by pi. So this is the second part of question 2. Now the third part is x equals to 4y. First x 0, then y equals to 0, or you can write 0 equals to 4y. This implies y equals to 0. तो अब y भी पुट करेंगे तो भी सेम सॉल्यूशन आएगा. तो अब हमें क्या करना है, डिफरेंट सॉल्यूशन लेना है. When y equals to 1, x equals to 4 into 1, that is 4. अब मैंने चेंज क्यों नहीं किया एक वेरिएबल को दूसरे में, क्योंकि ऑलरेडी x जो है वो y की फॉर्म में दे रखा है. तो अब यहाँ पे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम y की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. ये आया -4. नेक्स्ट ले लो, y इक्वल्स टू 2, सो x विल 4 into 2, that is 8. 4 सॉल्यूशंस बोले थे हमें, 4 हो गए हैं. 1, 2, 3, 4. So we can make the table also. X, y, x0, y0, y1, y minus 1, y2. So 8, 4 and -4. Simple. Now firstly I'll do question 4, then we will do question 3. Question 4 is find k, find the value of k if x equals to 2, y equals to 1 is a solution of 2x plus 3y equals to k. So write the equation 2x plus 3y equals to k. You have to write if x equals to 2, y equals to 1 is a solution of the given equation. Given equation की बजाय इसको नेमिंग दे दो, solution of 1, then they satisfy equation satisfy 1. That is left hand side should be equal to right hand side after putting the value x and y. Two x plus 3y equals to k. So put the value. X is 2 plus y is 1 equals to k. 2 2s are 4 plus 3 equals to k, or 7 equals to k.
So this is the value of k. Now question 3. Check which of the following are the solution of the given equation x minus 2y equals to 4 and which are not. Firstly, I'll write the statement. After putting values of x and y, if LHS equals to RHS of the equation, then xy is a solution, otherwise not. अब मैंने पहले ही पूरी स्टेटमेंट लिख ली तो मेरे को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट पार्ट इज 0,2. So we will proceed with 0,2. LHS equals to x minus 2y, RHS equals to 4. So x is 0, minus 2 into 2. 0 minus 4 is minus 4. So LHS is not equals to RHS. Therefore, 0, 2 is not a solution. Second part, 2 and 0, it is same. So you can try it yourself. Exactly same. Now third one is 4, 0. So left hand side is x minus 2y. Right hand side is 4. 4 minus 2 into 0. 4 minus 0 equals to 4. So LHS equals to RHS. Therefore, 4, 0 is a solution. Now the third part, 1, 1. So LHS is x minus 2y. RHS is 4. 1 minus 2 into 1. We will get 1 minus 2 equals to minus 1. LHS not equals to RHS. Therefore, 1, 1 is not a solution. Now fourth part, oh sorry, this is fifth part. Fourth part is under root 2, 4 under root 2. Left hand side is x minus 2y. Right hand side is 4. X is root 2 minus 2, 4 root 2. Root 2 minus 8 root 2. It will come minus 7 root 2. Left hand side is not equal to right hand side. Therefore, under root 2, 4 under root 2 is not a solution. So we have finished with the exercise. I hope you understand the topic very clearly.